welcome. You're with the news today, your primetime destination. News, newsmakers, talking points ahead of the big Christmas weekend. This is your destination for all the big stories. We have an exclusive coming up. Sakshi Malik, who broke down in tears yesterday, says she's quitting wrestling. The Olympian will be joining me in a moment for her first interview since that controversy. Also, parliamentary democracy in danger or not? Union Minister Prahlad Joshi is my other exclusive guest tonight. We'll ask him all the big questions of the Parliament session. So plenty on the show tonight. But first, as always, it's time for the 9 headlines at 9. The death toll rises to 4 in Jammu and Kashmir's Rajouri terror attack. Sources say terrorists held a recce in the region before the attack. Jaish-e-Mohammad's proxy outfit claims responsibility. Opposition targets the Modi government. Olympian Bajrang Punia now returns his Padma Shri award in protest against the newly elected wrestling body chief. Punia writes to the Prime Minister, says Betis are being forced to quit the sport. Priyanka Gandhi Vadra meets Sakshi Malik. Suspension showdown escalates as India MPs stage a protest in the capital. Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi accuses Rahul Gandhi of instigating the protests inside the Lok Sabha. In an exclusive interview to India Today, says suspensions had to take place. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah proposes to withdraw the contentious hijab ban imposed during the erstwhile BJP tenure, calls hijab ban BJP's vote bank politics. Enforcement Directorate issues a third summons on January 3rd to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the Liquorgate probe. Kejriwal had skipped the first 2 summons against him. In a setback to the Aam Aadmi Party, its Neta Sanjay Singh, Delhi court calls the Liquorgate case genuine, says evidence points towards Singh taking excise policy kickbacks, refuses to grant him bail. Gujarat government allows alcohol consumption in financial hub Gift City. Restaurants and hotels can now offer liquor to the hub's employees, visitors with a permit. 640 new COVID infections reported in India today, but only 22 cases of the new COVID variant JN1 detected so far. And French President Emmanuel Macron will be the chief guest for Republic Day 2024. Macron says he's been here to celebrate it with his dear friend Modi. And the news that's coming in late this evening, Priyanka Gandhi Vadra, the Congress leader, has met the Olympic medal winner Sakshi Malik, who yesterday broke down in tears and said she's quitting wrestling after an associate of Bhushan Saran Singh was chosen as the new Wrestling Federation of India chief. Remember, Sakshi had led the protests claiming there was sexual harassment, accusing Bhushan Saran Singh of sexually harassing wrestlers. They had hit the streets earlier this year. Yesterday, she had broken down in tears. Now, that was happened yesterday. Now, Priyanka Gandhi Vadra meeting Sakshi Malik. Also, Dipinder Hooda, Haryana Congress chief, meeting her to sympathize with her. All of this coming at a time when Olympic medalist Bajrang Punia today announced that he is returning his Padma Shri after Bhushan Saran Singh's loyalist was elected as the new Wrestling Federation of India chief. The wrestler has written a letter addressed to Prime Minister Narendra Modi announcing his decision and cited the denial of justice to female wrestlers as a reason. Congress leader Priyanka Gandhi Vadra also has empathized, as we said, with Sakshi Malik, who had announced her retirement in a huff on Thursday. So plenty happening there. Okay, listen in to Bajrang Punia. ये मेडल लेके मैं जी के तगड़ा भी जाएंगे आगे जाने का। जब ये इनको देखते तो वो चुभते हैं कि भाई ये किस लिए इस सम्मान हमें मिला था। जब हम बहन बेटियों के लिए लड़े उसमें हम सफल नहीं हो पाए, तो इन सम्मान का मुझे लगता है मैं हकदार नहीं हूँ इस सम्मान का। Okay, joining me now is our newsmaker tonight, Sakshi Malik, who broke down in tears yesterday, joins me on the show. नमस्कार साक्षी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे आइए। पहला सवाल ये है कि कल की जो इमेज हर आज अखबार में है, आप रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है आप रेसलिंग नहीं करेगी, आप रेसलिंग छोड़ रही है। जिस तरह से संजय सिंह जो भूषण सिंह सरन के करीबी है, उनको रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। क्या वजह है कि आपने इतना बड़ा फैसला इतने जल्दी लिया?
आपके विरोधी कह रहे हैं या बृजभूषण सिंह के साथी कह रहे हैं ये सब ड्रामा है, आप ड्रामा क्वीन हैं, क्या कहेंगी आप? देखो सर, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी लड़ाई बृजभूषण से थी और हमारी लड़ाई ये थी कि उसका जो कब्जा है ब्रिज फेडरेशन से हट जाए। और जो हमारी सरकार से बातचीत हुई थी तो यही हुई थी कि कोई महिला प्रेसिडेंट हो कि आगे जो है वो शोषण की शिकायतें ना आए। तो सरकार ने इस चीज पे एग्री भी किया था कि हाँ, हम आपकी जो है ये बात मान लेंगे। लेकिन रिजल्ट कुछ और ही निकला। रिजल्ट में बृजभूषण का राइट हैंड, उसका बिजनेस पार्टनर, जो उसके बेटे से भी ज्यादा प्रिय है, उसी को प्रेसिडेंट बनाया गया। तो उसके बाद से ही मैंने फैसला लिया कि अब मैं रेसलिंग नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर उस जैसे लोग फेडरेशन चलाएंगे तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं और अपना रेसलिंग आगे कर पाऊं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं क्विट करती हूँ। लेकिन साक्षी जी, सवाल ये उठता है कि चुनाव होते हैं, आप कह रहे थे पहले कि चुनाव होने चाहिए, सही होने चाहिए, कोर्ट की निगरानी में चुनाव होते हैं, कोर्ट मॉनिटर्ड होते हैं और संजय सिंह को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। सरकार कहेगी चुनाव होते हैं, अब कोई जीतता है कोई हारता है, इसमें सरकार क्या कर सकती है? संजय सिंह विंस द इलेक्शन, वो उनकी क्या गलती है, सरकार की क्या गलती है? देखो, जो स्टेट है, स्टेट में उसने अपने ही आदमी बिठा रखे हैं। जो स्टेट बॉडीज हैं उसमें बृजभूषण के ही आदमी हैं, तो वो जायज सी बात है, उन्हीं को वोट करेंगे। लेकिन सरकार जो है अपने लेवल पे भी तो कुछ कर सकती थी। अपने लेवल पे कर सकती थी कि हम अब की बार 50% महिलाओं की भागीदारी चाहते हैं तो महिलाओं को वोट कीजिए। देखो, सरकार करने को तो कुछ भी कर सकती थी। देखो, पिछली जो फेडरेशन थी उसमें एक भी महिला नहीं थी। अब की जो फेडरेशन बनी है, जितने भी पद हैं आप चेक कर लीजिए, एक भी महिला नहीं है। क्या हमारा महिलाओं का इतना भी अधिकार नहीं है कि हम, और जो कि हम बराबर के मेडल देते हैं, मैंने भी रेसलिंग में मेडल दिया, और भी हमारी लड़कियां जो हैं रेसलिंग में बहुत सारे पदक जीत रही हैं, पदक लेके आ रही हैं। तो क्या महिलाओं की भागीदारी नहीं होनी चाहिए सर? मैम, आपकी बात अपने आप में जायज है कि महिलाओं को ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए इन फेडरेशंस में, लेकिन मैडम चुनाव हो गए, साक्षी जी तचुनाव हुए, कोर्ट ने उन चुनावों को मॉनिटर किया, अब सरकार ऐसे इसको कैसे रिवर्स कर सकती है? वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने भी इन चुनावों को माना है, अब सरकार कैसे दखल देगी? क्योंकि साक्षी मलिक कह रही है नहीं, मुझे संजय सिंह नहीं चाहिए। देखो, हमें कुछ नहीं पता। जब हमने सरकार से बातचीत रखी थी तो हमसे कमिटमेंट हुई थी कि आप अब आगे प्रोटेस्ट को रोक देंगे और आपकी सारी बातें जो है हम मान लेंगे। हमारी मांग जो थी वो हमने रखी थी और वो पूरी तरीके से कमिटेड थे कि हम महिला प्रेसिडेंट बनाएंगे। और जो है आपस में दोनों की कमिटमेंट हुई थी और इसीलिए हमने समझौता किया था, अपना प्रोटेस्ट खत्म किया था इसी वादे के साथ। लेकिन वो जो है वो कल पूरा नहीं हुआ है। अगर क्रोनोलॉजी देखूं, शुरुआत में जब आपने ये प्रोटेस्ट शुरू किए थे तब आपने कहा था कि आप चाहती हैं एफआईआर फाइल हो सेक्सुअल हैरेसमेंट का बृजभूषण सरन सिंह पर, दिल्ली पुलिस नहीं फाइल कर रही है। आपने प्रदर्शन किए, एफआईआर फाइल हुआ, फिर चार्जशीट भी हुई, आपने कहा चार्जशीट नहीं हो रही है, चार्जशीट भी हुई। फिर एक कमिटी भी बैठी थी जिसमें मैरी कॉम थी, अलग अलग नुमाइंदे थे जिन्होंने आपकी बात सुनी। ये सब होने के बाद अब आप क्या चाहती है? क्योंकि एक ये भी नैरेटिव चल रहा है कि आप डिक्टेट करना चाहती है कि जो आप ही कहेंगी वही होगा। किस तरह से जब आप देखती है, जब सरकार के कुछ लोग हमें कहते हैं कि ये रेसलर्स जो हैं डिक्टेट करना चाहते हैं, इनका डिक्टेटर एक तरह से डिक्टेशन चल रहा है, ये धमकियां दे रहे हैं हमें। देखो, हम कोई डिक्टेट नहीं कर रहे कि कैसे चलना चाहिए। हमारी सिर्फ यही मांग थी कि हमारी फेडरेशन अच्छे से चले और कोई भी शोषण ना हो, बच्चों को उनका पूरा अधिकार मिले, पहलवानों को पूरा अधिकार मिले। हम कोई डिक्टेट नहीं कर रहे और ना ही हम किसी लालच में बैठे थे कि या फेडरेशन के किसी पद के लिए बैठे थे कि हमें कोई फेडरेशन में पद चाहिए। हमारी मांग इतनी सी थी कि बृजभूषण से जुड़े हुए आदमी फेडरेशन में ना आए।
साक्षी मैम, ये भी कहा जा रहा है कि आप राजनीति कर रही है। आज भी कुछ कांग्रेस के नेता आपको मिले, दीपेंद्र हुड्डा, अभी हमने तस्वीर दिखाई, प्रियंका गांधी वाड्रा अभी आपसे मिलकर आ रही है। क्या ये लड़ाई जो है कहीं ना कहीं रेसलर्स बनाम बृजभूषण सिंह के बजाय अब बन गई है कांग्रेस बनाम भाजपा? कितना सही है ये? नहीं नहीं, ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। देखो अभी जो प्रियंका जी हैं और दीपेंद्र जी हैं वो हमारे घर आए मिलने, तो हम किसी को मना नहीं कर सकते कि आप क्यों आ रहे हो। वो उनका पर्सनल वो है। हमारे प्रोटेस्ट पे भी बहुत सारे नेता आए हमें सपोर्ट करने। आज हम दुखी हैं, अगर हमें कोई सपोर्ट करने आ रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो कल कोई अगर भाजपा का नेता आ जाए, प्रधानमंत्री आपको फोन करें, तो आप उनसे भी मिलेंगी? सर दरवाजे खुले हैं। आज मेरे घर में आए हैं प्रियंका जी, दीपेंद्र जी मेरे घर आए हैं, मेरे दरवाजे खुले थे। और कल कोई भाजपा का नेता होगा, वो भी अगर सपोर्ट के लिए आएगा तो दरवाजे खुले हैं सर। ये जो कहा जा रहा है कि आप शायद हरियाणा, साक्षी मलिक चुनाव लड़ेंगी हरियाणा से कांग्रेस टिकट पर, क्या ये अफवाह है? ये बिल्कुल गलत है। नहीं नहीं सर, अभी ऐसा कोई ऐसा फैसला हमने लिया नहीं है। और अभी जो मेरे साथ कल हुआ है, मैं उसी के अभी दुख में हूँ और इसको निकलने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो अभी के लिए ऐसा कोई डिसीजन मैंने लिया नहीं है। पर आप रूल आउट नहीं कर रही है कि हो सकता है अगले साल चुनाव है हरियाणा में, आप चुनाव लड़ सकती हैं या बृजभूषण सिंह को टक्कर दे सकती हैं? देखो अभी के लिए नहीं बता सकती, लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर में क्या पता क्या करना पड़ जाए। लेकिन हाल फिलहाल मैं मना ही कर रही हूँ। यह भी कहा जा रहा है साक्षी जी कि आप और अन्य रेसलर जो हैं वो चाहते थे डायरेक्ट एंट्री इनटू ओलंपिक्स, आप क्वालिफायर्स नहीं करना चाहती थी, यह भी मामला उठा और एक क्वालिफायर में आप खुद हारी थी। क्या यह भी प्रचार है कि आप लोग जितने भी रेसलर्स प्रदर्शन कर रहे थे वो चाहते थे डायरेक्ट एंट्री इनटू ओलंपिक्स विदाउट ट्रायल्स? मैं आपको एक बात बता दूं, जब मेरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई मैं हो रहा था तो बृजभूषण ने दूसरी कंट्री में मेरी ट्रायल कराई थी क्वालिफिकेशन से 4 दिन पहले। और आप ये बातें अब वो बोल रहा है कि हम बिना ट्रायल्स के जाना चाहते हैं। कोई उससे क्वेश्चन पूछ के देखे कि मैं इंडिया में फर्स्ट आके गई थी, सिलेक्शन ट्रायल्स में मैं फर्स्ट आई थी, और दूसरे कंट्री में जाके जिस लड़की को मैंने इंडिया में हराया उससे मेरी ट्रायल्स कराई जा रही हैं। किस रीजन? और उसका रीजन एक बार आप उनसे अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर ले लोगे तो मैं मान जाऊंगी। और ना ही मैं आज तक बिना ट्रायल्स के कोई भी कंपटीशन में खेली हूँ, और ना ही कभी। अभी तो मैंने क्विट ही कर दिया है, लेकिन मैं अपनी रेसलिंग की करियर लाइफ में मैंने आज तक बिना ट्रायल्स के कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं खेला, ना ही मैं गई। सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का है। बृजभूषण सरन सिंह के खिलाफ, एक एमपी के खिलाफ, एक सांसद के खिलाफ आपने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। क्या आप उन आरोपों पर अभी भी बरकरार है? क्या वाकई इस तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस के प्रमाण आप पूरी तरह से देने के लिए तैयार है? क्या आप समझती है जिन्होंने ये एविडेंस दिया है पुलिस के सामने, क्या अब वो कार्रवाई चलेगी या आप डरती हैं अब तो जब वो चुनाव एक तरह से जीत गए हैं, अब वो चार्जेस का क्या होगा? सर ये बताओ, आप जब दोबारा से उसी का ही बंदा फेडरेशन में आ रहा है तो मुझे तो ये लग रहा है जो लड़कियों ने एफआईआर करा रखी है वो ही पीछे हट जाएंगी। बेचारी 20-22 साल की लड़कियां हैं, करियर उनका पूरा अभी आगे के लिए बचा हुआ है, तो वो अपने करियर को रिस्क पे नहीं लेंगी। वो उनको डरा धमका के उनको भी पीछे कर लेगा, तो और लड़की आने की बात कहां से हुई? और मुझे अभी भी ये जवाब देते हो, और आपने जो एक क्वेश्चन पूछा ना, मुझे बड़ा दुख हुआ कि अभी भी आपको लगता है कि मतलब हमारी लड़ाई झूठी थी, या ये जो इस पे आरोप लगे हैं ये झूठे थे। नहीं, मैं साक्षी जी, मैंने पहले दिन से कहा है कि बिटवीन एन एमपी एंड ओलंपिक रेसलर्स माय हार्ट विल ऑलवेज बी विद ओलंपिक रेसलर्स। मैं इतना ही आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको विश्वास है कि दिल्ली पुलिस अब कार्रवाई कर पाएगी, आपको न्याय दे पाएगी? क्या जिन लड़कियों ने एफआईआर फाइल किया है वो उस पर अमल रहेगी ताकि आपको न्याय मिले सबूतों पर? आखिर में ये कोर्ट को निर्णय लेना है कि बृजभूषण सिंह वाकई बेकसूर है या दोषी है, ये तो कोर्ट तय करेगा।
कल ब्रिजभूषण का बिजनेस पार्टनर जब से प्रेसिडेंट बना है, मैं एक भी लड़की की गारंटी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वो दोबारा से उसके हाथ में पावर है। वो लड़कियों को डराएगा, धमकाएगा। एक को तो जो केस जिसने किया है उसको डोप में फंसा दिया है। बजरंग ने भी वीडियो डाली थी, एक्सपायरी डेट की वो डोपिंग किट लेके जाते हैं और जबरदस्ती डोपिंग लेके जाते हैं, जबकि ऑफ सीजन चल रहा है अभी। जिस लड़की ने केस किया होता उसको भी फंसा दिया है कि ये डोप पॉजिटिव है। तो धीरे धीरे करके वो लड़कियों को रीच आउट कर रहा है और उनको तोड़ रहा है। तो एक बेचारी मध्य परिवार से आती है, वो कब तक सरवाइव कर पाएंगी? अगर प्रेसिडेंट कल महिला बनी होती ना, मैं आपको और लड़कियां आते हुए दिखाती। एक आखिरी सवाल मैम, आप कल बड़ी भावुक हुई थी, आपने फैसला लिया कि अब आप रेसलिंग छोड़ रही हैं। क्या आप उस डिसीजन पर अमल है, या अभी भी अगले साल ओलंपिक्स हैं, 2024 के ओलंपिक्स हैं, क्या आप दोबारा सोच पाएंगी कि शायद अभी भी आप रेसलिंग करना चाहेंगी? देखो, मेरे लिए बहुत ही ये दुखी अभी पल है, क्योंकि कल ही मैंने फैसला लिया है कि मैंने रेसलिंग को छोड़ दिया है। जिस रेसलिंग ने हमें इतना कुछ दिया और देशवासियों के सपोर्ट से मैंने इतने मेडल जीते, रेसलिंग की वजह से हमारा नाम है, और उसको ही मैंने छोड़ा है। तो मेरे लिए कि ये बहुत सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन है, और मैं आज भी कल वाले डिसीजन पे कायम हूँ कि मैं वापस रेसलिंग नहीं कर पाऊंगी अगर ब्रिजभूषण जैसे आदमी फेडरेशन में रहेंगे तो। आखिर में आज बजरंग पूनिया ने भी कह दिया कि वो पद्मश्री लौटा रहे हैं। ये बड़ी बड़ी दुखद घटना है जो हो रहा है, लेकिन क्या ये लड़ाई जारी रहेगी? क्या आपने गिव अप कर दिया है? आज मुझे आपको सुनकर लगता है कि कहीं ना कहीं आप निराश होकर गिव अप कर रही हैं। देखो, हमने तो अपनी पूरी ताकत लगाई है लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन ये लड़ाई हमने अपनी पूरी ताकत लगाई लड़ाई लड़ने में, लेकिन जो आने वाले जो हमारा फ्यूचर है, जो लड़कियां हैं, शायद उनको लड़नी पड़ेगी। हम तो जीत नहीं पाए, लेकिन अगर ये शोषण लगातार ऐसे ही चलता रहा तो आगे वाली लड़कियां फिर से लड़ाई लड़ेंगी, और क्या पता हिम्मत ही ना बने लड़ाई लड़ने की। तो क्या साक्षी मलिक हार गई? क्या आप हार मान रही है आज मेरे शो पर? हाँ, हम हार तो क्या माने, सदा वही बात है कि सदा राज तो किसी का भी नहीं रहा है। ठीक है, आज वो चिल्ला के बोल रहा है कि दबदबा है और दबदबा रहेगा, तो ये है कि पूरा मतलब इतने लंबे समय तक किसी का राज नहीं चला है। राज पलटता है, बुराई हारती है, अच्छाई जीतती है। तो एक ये समय भी आएगा कि हमारी रेसलिंग फेडरेशन में अच्छे आदमी बैठेंगे, और जो है लड़कियां खुल के खेल पाएंगी, खुल के अपनी बात रख पाएंगी। एक आखिरी सवाल मैम, क्या कहीं ना कहीं आप निराश इस वजह से है कि ज्यादा एथलीट्स ने आपका समर्थन नहीं किया? कि हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स हो, उन्होंने आपका समर्थन नहीं किया? क्या अगर वो समर्थन करते आपको ज्यादा ताकत मिलती मैम? देखो, बड़े बड़े एथलीट्स में आप किसको काउंट कर रहे हो? नीरज चोपड़ा से बड़ा आज के दिन हमारे देश में कोई, मुझे नहीं लगता कोई खिलाड़ी है। एक ओलंपिक स्पोर्ट का खिलाड़ी नीरज चोपड़ा है, और नीरज चोपड़ा ने भी हमारा सपोर्ट किया है। दूसरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा जी, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। 2 इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड हमारे देश में है, दोनों ने सपोर्ट किया, और इससे ज्यादा सपोर्ट का क्या? इसके बावजूद भी अगर हम नहीं अपना ये जो है प्रोटेस्ट ये नहीं जीत पाए, तो अब इसीलिए हमने, वही मैं बात कह रही हूँ कि हमने अपनी लड़ाई पूरी दिल जान से लड़ी है, और हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन ये लड़ाई जारी है। हमारे बाद और बच्चियां आएंगी और वो आएंगी, शायद उनमें हिम्मत हो कि वो दोबारा लड़ाई लड़े। साक्षी मलिक जी, मैं आपको एक चीज आज कहना चाहता हूं। आपने देश का नाम बहुत रोशन किया, आप मेडल जीती है, आप हमारे लिए एक हीरो हैं, हीरोइन हैं, और आप लड़ते रहिए, क्योंकि जब तक आप जैसे लोगों की आवाज सुनाई नहीं देगी, तब तक मुझे लगता है जो सत्ता में लोग होते हैं, जिनके पास पावर होती है, वो झुकेंगे नहीं। तो आप लड़ते रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। रोना नहीं मैम, लड़ते रहिए। थैंक यू सो मच
Sakshi Malik for joining me there and answering all my questions. Thank you. Okay, let's turn from there to my other big story today, and it's coming from Parliament, where there is no end to the MP suspension showdown even after the Parliament session is over. Opposition parties today, led by the Congress, staged a protest at Jantar Mantar, carrying placards that read "Democracy Expelled." While the opposition is accusing the centre of caging dissent, top Modi ministers are now accusing Rahul Gandhi of instigating the Parliament disruptions. Take a look. Indian politics at boiling point. Mass suspensions of opposition MPs and Parliament security breach are the biggest flashpoints this political season. Opposition MPs from the India bloc took to the streets on Friday in a march from Parliament to protest against the suspension of 146 lawmakers. Bearing placards that said "Parliament caged, democracy expelled," leaders from opposition parties upped the ante against centre. Congress President Mallikarjun Kharge took aim at Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah for not addressing the security breach in Parliament. ऐसे कई जो 147 एमपीज में दूर दूर बैठे थे, मुंह भी नहीं खोले थे, बोलने का बात उनको समय भी नहीं मिला, लेकिन उसको सस्पेंड किया गया। पार्लियामेंट के बाहर Congress MP Rahul Gandhi slammed the Modi government for suspending the MPs for merely asking questions on the Parliament security breach. मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया, पार्लियामेंट के बाहर खड़ा कर दिया। ये सवाल मीडिया ने नहीं पूछा, क्यों किया, कैसे किया। The opposition has been rallying against the BJP, accusing the ruling party MPs of causing disruptions whenever opposition lawmakers tried to bring up the matter for discussion in the House. लोकतंत्र की मां की हत्या हो गई है। अब लोकतंत्र की मां को पुनर्जीवित करना, क्योंकि विदेश जाते हैं तो सीना ठोक के बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी से आया हूं। अब क्या सीना ठोकेंगे पीएम साहब? आज देश के संविधान और जनतंत्र को बचाना है, वो संकल्प लिए हैं और यही कहा कि भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। The centre hit back at Rahul Gandhi, claiming he's backing parliament intruders. Many MPs, कुछ लोगों को हमने सस्पेंड किया शुरुआत के दिन में, बाद में सब लोग आके रिक्वेस्ट करना शुरू किया, हमको बाहर जाना है, हमको सस्पेंड करो करके। ये कांग्रेस पार्टी का लेवल है। With nearly 150 MPs suspended and bills passed without any participation by the opposition, the last parliament session of 2023 has deepened the divide between the Modi government and the opposition. Bureau Report, India Today. Hello and welcome to this India Today special, where we are joined by a very special guest, a man who's been in the eye of the news for a variety of reasons in the last couple of weeks. The Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi joins us. Appreciate you joining us, Mr. Joshi. You've had a very tough Parliament session. In the last few days alone, last week, 146 MPs suspended. Many are saying the government wants an opposition-mukt parliament. How do you respond? Government wants that everything should be discussed, every bill should be discussed. But Congress and opposition wants that it doesn't want to discuss. That is the problem. So when they decide that we should not participate, then what option government will have? So, but the treasury, you are in the treasury benches, you are Parliamentary Affairs Minister. It is your job, your responsibility to get Parliament to function. You're blaming them, they are blaming you. They are saying all they wanted was Home Minister Amit Shah to make one statement on the security breach in Parliament. Parliament would have functioned normally. That's all. See what they did in the last session. We want discussion on Manipur. That was exactly the words in the all-party meeting before to Parliament, where we normally have the all-party meeting.
At that time, what they said, we want discussion on Manipur. Then I spoke immediately to Rajnath Singh ji. And before to that also, I was having idea. I had a word with the Honorable Home Minister. He said, you can say okay. When I said okay, then what they started, we want Prime Minister statement. See, if you decide and come not to allow the Parliament to function, so when you decide, ये जो सोते हैं ना, उनको आप जगा सकते हैं. जो सोने का नाटक करते हैं, नींद करने का नाटक करते हैं, उनको अब जगाने का बहुत मुश्किल है. No, but what was the problem with the Home Minister issuing a statement in Parliament? It was a simple thing to do. See, you could have resolved it on day one. See, the day on which this incident took place, on that day itself, the same day, as soon as it was over, 2 o'clock, it got we got reassembled. Parliament got reassembled. Then discussion was on, and before to that, all party floor leaders meeting was held, and at that time also it was clearly explained that previously also such incidents have taken place, and more serious incidents have been taken place. At that time also, since it happened within the chamber of the Parliament, within the chamber, so Speaker has taken the note. Speaker is the custodian, and it comes under his authority. At that time, whatever the procedure was followed, that procedure is followed. Now it is been, one is it is been there will be high level inquiry. Second is for the further increase in the security, strengthening the security, DGCRPF will be given charge, and he will be addressing the issues and he will recommend it. After having said that, Parliament restarted. After 40 minutes of the discussion, what happened? Even Adhiranjan spoke. After that, what happened to Congress party and these other opposition party? Why did you try to disrupt the Parliament? And it was told to them also, let the details come in, because who they are, all those things are not known. Now the Speaker has made a statement, Speaker has written a new letter. It is, let the details come out and government will make a statement also. We never said we will not make the statement. But you decide and come not to run the Parliament. How can you function? You're saying that the opposition had pre-decided not to let Parliament function, but look at what the government responds, or the chair responds by suspending 146 MPs. I mean, is this not clearly disproportionate? Is this not sending out a wrong signal for the future now? Every time anyone now protests, you're going to suspend them. 146, sir. Rajdeep, what do you mean by protest? I think you are not covering the Parliament. Somebody was covering the Parliament. No, I was watching Parliament, sir. You listen to me. See, the day one in the new Parliament, because that was the first session of 2 days only there, and when we did the Women Reservation Bill, this is the first session effectively from the new building. Then Speaker called a meeting under the leadership of, presidency of the Speaker, and in other house with the chairman, of course. All parties sat together and he made a request. Now 75 years is over. Whatever has happened, happened. So you please cooperate, and nobody should bring the placard. And as far as possible, you avoid the disruption, but at least placard is clearly banned. This is what was said. And he put forth a resolution in the floor leaders meeting. Everybody agreed. And if somebody comes with the placard, everybody agreed that they will not bring placards. Yes. The floor leaders meeting. Yes. Then it was decided that if somebody comes, then there will be action, because on the same day, on the day on which the meeting was held, Mr. Danish Ali came with the placard on his body, and at that time he told, in any form, if somebody brings, then there will be suspension. Everybody agreed, and 4 or 5 days, not 4 or 5 days, almost up to 18th, if my memory goes right, 18th was the incident. From 4th to almost 18th, 12th, everything went on well. There was a discussion, and even on that day also, discussion started. Ashwini Vaishnav piloted the bill, and after that 40 minutes, आपको कोई कहीं से डायरेक्शन मिलता है, आप तुरंत आके आप डिसरप्ट करते हैं.
But why suspend? Then my what point is is, no, Rajdeep. aren't there other ways in which you can start a dialogue between the government and the opposition? What many of us who have been observing Parliament feel that there is a complete absence of any kind of dialogue. There is no samvad. It is, you have your position, they have their position, and there seems to be no meeting ground. I mean, surely there could be some way in which you could find a meeting ground, sir, between the two sides. Are you telling me it is impossible to work with the opposition? No. Who said there was no samvad? If you work on a perception, I can't reply. I can reply to the questions. See, there we requested them. After first day, we suspended 13 MPs as per the agreement. Then we told them, please do come, let us have a talk. And Speaker had also called. Do have a meeting. Then you decide that. Hereafter, at least, we will not bring the placard. Let us discuss everything. We don't have any problem. And there are so many bills, and out of that, around 12 bills, which we are supposed to pass from that day to till the end, out of 12 bills, more than 5 bills are of the Home Ministry. You can discuss anything. We are open for the discussion. You will be club, but assure that we are not going to bring the placard. But what they wanted that after this result of this election, Parliament is functioning so smoothly. Everybody, some of the MPs of the Congress party and other party, they were expressing also, इतना स्मूथ चल रहा है ऐसे, ये क्या पार्लियामेंट है? तो मेंटालिटी देखो जी. तो तब दे डिसाइड किया कि पार्लियामेंट नहीं चलना, क्योंकि दे वांटेड टू डाइवर्ट. ये हार का बदला लेना चाहते थे. जो लोगों ने हराया, तो पार्टी ने नहीं हराया. पार्टी वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं वो हार का बदला लेना चाहते थे. वो कह रहे हैं दिस गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू फेस एनी इनकन्वीनियंट क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट. सिक्योरिटी ब्रीच पर सवाल ही नहीं गवर्नमेंट लेना चाहती है, बिकॉज इट विल एम्बैरेस द गवर्नमेंट, एंड दैट हैज बीन द पैटर्न. वेदर इट इज कोविड, वेदर इट इज चाइना इंट्रूजन, नाउ दिस सिक्योरिटी ब्रीच ऑन इनकन्वीनियंट क्वेश्चंस, गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू आंसर. See, on all the issues where there is no involvement of the sensitiveness and other things like military and security affairs, everything we were ready and we are ready. Who say they only asked Manipur. Then did we not discuss on the Manipur? Then they asked economy, discussion on the economy and unemployment. Did we not reply on that? What they are talking and how they are behaving, you please try to let them analyze themselves. No, so then explain to me, Mr. Minister, the 17th Lok Sabha is almost coming to an end. It has seen the least number of sittings in terms of overall. I know you had 2 years, a year went because of COVID, so that was one restriction. But overall, the number of adjournments, number of disruptions have been at an all-time high. And therefore, Parliament has functioned also for the fewest days. Is that not something worrying as an observer, as someone who's been an MP for so many years, that it almost seems from the outside Parliament has become dysfunctional, sir? No, it is really a worrisome factor. There is a continuous disruption without any proper, reasonable cause also. There is a disruption. It is most unfortunate. But we are trying our best to convince them, and we have also told that anything we are ready, any subject we are ready for the discussion. And even on the China and other things, whatever needed statement was there, we have made the statement. And but bills are being passed without discussion. Budget was passed No, without Rajdeep, a proper discussion. The criminal procedure code this week was passed without discussion. So many MPs suspended. It almost seems at the moment that we are heading towards, according to the critics, single party democracy. What about multi-party democracy? Rajdeep, first you withdraw the word that without discussion. Budget was passed through a voice vote? No, please listen to me, no? Sir. When you ask the question, you need to listen also, no? Please. So you, first of all, yesterday's discussion, how many hours it was discussed? And in the BAC, what they demanded? We said 4 hours each, 3 bills, 12 hours, and discussion goes together. They said, we want 15 hours. We said 15 hours, okay, no problem. And yesterday it was discussed at around 2 o'clock we started, 8:30 it was ended. And other parties also discussed, our party also discussed. And as far as these 3 bills are concerned, these 3 bills, whatever the consultation, whatever the overall stakeholders consultation, इतना consultation चर्चा किसी बिल में शायद नहीं हुआ है. तो Honorable Home Minister wrote to the Supreme Court, Supreme Court judges, High Court judges, all MPs, many of the lawyers, and then to the standing committee.
I think thousands of, lakhs of, suggestions we received, everything was examined. And then entire new bill was brought after it came out of the standing committee. Entire new bill, because there are so many suggestions. Please listen to me. Yes. So how can you say, and in Lok Sabha, we discussed it more than, I think, 6-7 hours. How can you say if they have decided? See, after a suspension of 13 MPs, what was their request? You please suspend also. You please suspend us also. This was the request from the opposition party. Is it fact or not? You ask them. So you're saying the opposition used the suspensions as a tactic in a way to ensure that Parliament is... They never wanted to run the Parliament. They didn't want to run the Parliament. But I want to understand from you, when I look at the numbers, 2004 to 14, sir, UPA 1 and 2, 50 MPs were suspended Lok Sabha. 2014 to 23, it's 210 and counting. What does this suggest? Is there a breakdown of trust? The opposition does not want to work with you, and you are a majority government, you don't want to work with the opposition. My way or the highway seems to be on both sides. That is not correct, and I have already explained to you the position many a times. We requested them. We asked for the consultation. We asked for the, ultimately it is the democracy where you can corner the government by disrupting government. Normally क्या होता है? By disrupting, opposition will be losing the opportunity. You could have raised 100 questions against the government, and इतने बड़े देश में, in such a big country, you can, any government, कितने भी अच्छे काम करते हैं तो भी कहीं ना कहीं तो कॉर्नर कर सकते हैं. वो भी आप ना सुनो, आप अपॉर्चुनिटी खो लेते हैं, और हमारा रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी तो आप चुनाव के रिजल्ट के बाद आप क्या बोलते हैं? आप ये बोलते हैं ऐसे आराम से चल रहा है, और एक मौका मिलता है 40 मिनट, आप 2 बजे के बाद 40 मिनट चर्चा क्यों किया आपने? बाद में कौन बोला आपको रोकने के लिए? So who do you think stopped it? You're hinting that someone outside the Parliament instructed the MPs to disrupt Parliament and not allow it to function. That's the insinuation you're making, right? You're saying someone is directing the Congress MPs to get themselves suspended. As soon as it started again at 2 o'clock, it ran up to the 2:40. And who disrupted it? Ask why did they allow for 40 minutes, and then why did they stop it? So, but the question you reply my question. So that is for the opposition MPs they have to reply as to why they disrupted. You have to tell me why you are unable to get this Parliament to function. I say, is there a breakdown of trust? They don't want to, in a way, work with your government for whatever reason. And you have a majority, so you can pass all these bills without needing the opposition. You don't even need the opposition. They are saying this is Gujarat model that has been brought to Delhi. There also, Parliament would be the Assembly would be disrupted, MLAs suspended, all bills passed without discussion. From last 30 years, they are telling Gujarat model, and they are trying to ridicule it. But last 20 years, people have accepted it. First, people accepted Gujarat के मतदारों ने accept किया. अभी देश ने एक्सेप्ट किया है, और तीसरी बार भी एक्सेप्ट करने जा रहे हैं. यही प्रॉब्लम है उनका तो पेन जो है. अभी जो सर्वे रिपोर्ट आया है, 5 राज्यों के चुनाव का नतीजा जो आया है, इसके बारे में उनका बहुत ही असुविधा हो रहा है. वो तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है. वो अनकंफर्टेबल का कारण है, they do not want to run the parliament. Could someone have picked up a phone, maybe even the Prime Minister, spoken to leaders or senior leaders of the opposition and said, look, let's get Parliament to function. This is not sending out a right signal. It appears the Prime Minister made no such effort. Did you make such an effort? Did anyone make an effort to reach out to each leader? Myself, Piyush ji, many we have done. We said, if you are okay for the consultation, if you are okay for the dialogue, we are ready. But you have to only ensure us that we will not bring the play card as it was decided in the speakers and chairman's meeting. Where all parties were present. All parties and they all agreed. You're saying that they will not. How many times I should? No, so because this is you're telling me that they all agreed. You please listen to me. I am making this statement very categorically in presence of speaker and in presence of chairman. It was decided that this is a new parliament. Let us do a new beginning. We shall not bring the play card. At least let us not bring the play card. This is not good. This is not good in the interest of, because people are looking at us. This is the parliamentary democracy. Let us not do that. And
everybody has agreed that. But you agree? Nobody disagreed. In that meeting, nobody disagreed. You're saying, but you agree, sir, that the security breach is a serious issue. I have never. And it needs a serious investigation and maybe a serious explanation. Will we get that explanation? Who said explanation will not be given? This is under the custodian of the. See, previously also incident has happened. Yes, 2001, Mr. Advani, Home Minister, stood up in Parliament and replied. राजदीप जी, मैं आपको यही कह रहा हूँ, जो मैं शुरू करता हूँ, बीच में आप बोले तो please go ahead. You please listen to me, na? Please, sir. See, 2001 was an altogether different issue, and before to 2000, whatever had happened, where dagger was bought inside, pistol was bought inside, so many such incidents happened. At that time, what procedure was followed by the then learned speaker, the same procedure was followed by the speaker. Now it is because it happened entirely within the chamber. So matter was handed over to the police. That is, the high level inquiry is going to be conducted. This is what he announced. Mr. Speaker announced. Then it was handed over to Delhi police. FIR was filed. Then for the further security, DG CRPF was made to observe and give his comments. Then now inquiry is going on. So many people are being arrested. So who said we will not make the statement? Let the preliminary inquiry be over and come the report. How can we make the statement? And 1 minute, sir. Speaker has made the statement that this has happened, and as per the previous precedents, I have given it to the high level for the inquiry to the Delhi police, and also I have asked the DG CRPF to go into the details. And after Speaker making statement, the government after receiving the report, who is behind it, why it happened, all those things will be naturally it has to be reported to the Parliament, and we have never said no for that. So, as Parliamentary Affairs Minister, do you regret that under your stewardship, 146 MPs accounting for almost 25% of the country have got suspended? I feel even to suspend one MP, I feel very bad, because ultimately it is democracy and everybody should be allowed to participate. And our best effort was that everybody should be inside. And especially after 13 MPs suspended, we folded hand, we requested them personally. तो इसको अगर आप एक कमिटमेंट दे दो हमको कि आप प्ले कार्ड नहीं लाएंगे, इस पर कुछ बैठ के वार्तालाप करके कुछ करा देंगे. But they had decided not to allow the parliament to function. No placards and no entering the well of the house, right? These were the two basic conditions at that time. Basically more thrust. But placard, the thrust was on placard. Thrust was on the placard. So otherwise also even entering the well also, it was well discussed. But somehow I can't say that that was also 100% agreed, but at least placard, it was well agreed that we will not bring the placard. But at the insistence of some particular leader, immediately it was broken. You want to tell us who that leader is? It is Mr. Rahul Gandhi. That's what you are telling me. Now you are telling me Rahul Gandhi was the one who He never wanted for parliament that it. So he's the one who goaded these MPs to take placards, you are claiming. That's a serious allegation, yes. Mr. Minister, you're making. On the other side, this session started with Mahua Moitra being expelled. That in a sense also got the backup of the opposition. They feel all of this was rigged, fixed because Mahua Moitra had raised the Adani issue in parliament. That's what they claimed. No, they can claim anything, but is it not a fact that she gave her ID to some other competitor of some other business person? Corporate world में जो काम करते थे उनको नहीं दिया है, तो did she not agree? And is it not a fact that in one single day her official email was accessed in 5 countries, in 5 different places? And is it not fact that legitimate procedure was followed? She was given a due hearing in your view? Ethics committee में पूरा उनको मौका दिया गया, and the same procedure was followed when 11 members were expelled by the Somnath Chatterjee. As far as I may be having difference of opinion as far as Somnath Chatterjee's ideology is concerned, but he was a very learned man. He knew each and every rule, and he at that time gave a ruling that since they have been appeared before the committee, they need not talk anything here. This is what is followed, and due process was followed. And because she herself admitted, yes, I have given ID, and the concerned person gave the affidavit that I have used her ID and I have given her so many things, and he came and
endorsed in front of our ambassador there. Should he not have been cross-examined? The person is making charges against an MP. Should the MP not have the right to cross-examine the person? No, he has filed a affidavit. She did not deny, I have not given the ID. See, what he has done, that is altogether, it is a different, it has to be inquired differently, whether how ethics committee and speaker goes, I don't know at this moment. But is it not a fact that she has agreed that I have given the ID? But she has the right to cross-examine also. No, that is different. But basically, morally, is it right? Okay, I want to ask you this. No, morally, is it right? Not wrong, no. Okay. I cannot give my mail ID, which is given to me, ask the questions, raise the discussion in the house to somebody else who sits in the Dubai and operates. ये तो चलता है क्या? Sir, we are ending a year where Rahul Gandhi was disqualified from parliament, eventually came back. We've had a Lakshadweep MP who was also disqualified over a criminal case. All of these matters have led someone to believe, and then the latest incident led generally a general feeling, government and opposition cannot work together. I repeat, breakdown of trust. You don't agree with this breakdown of trust? No, we are trying to create the atmosphere where we can work together, but they have decided, intolerance is developing like anything. They don't, ये मोदी जी कहाँ से आया? You're saying they don't accept Modi as Prime Minister? The people have accepted it. They feel that, ये मोदी जी कहाँ से आया? ये हमारा चेयर, हमारा ये प्रधानमंत्री का, ये कहाँ से बैठे? ये सोच है ना, ये सोच उनको, ये जो हारे, 2 बार हारे हैं और स्टेट में भी हार रहे हैं ना, ये डाइजेस्ट नहीं कर रहे. ये डेमोक्रेसी है, हार और जीत जनता डिसाइड करते हैं, हम नहीं करते हैं. जब जनता डिसाइड करते है उसको स्वीकार करना. हम 2 MP थे, 2 MP जब अद्वानी जी वाजपेयी जी के जमाने में हम एक बार 2 MP थे, तब भी हमने ऐसा व्यवहार नहीं किया है जी. So finally, what's the solution, Mr. Joshi? What is the solution? You're the Parliamentary Affairs Minister. You've seen all this happening. You're a senior member of Parliament. What is the solution? Are we just, I mean, should we just lock up Parliament? Parliament ko lock up kar dete hai. Let whoever is the majority party carry on with legislative business. Opposition will continue to disrupt. Is that the solution? Do you have a solution, sir? See, once again, I will tell you, opposition will have a greatest opportunity to order any government. With folded hand, I request them. अभी भी आप डिसाइड करो, जो निर्णय हुआ है स्पीकर के सामने, तो हम प्लेकार्ड वगैरह नहीं लाएंगे. हम तो फिर से आपसे बात बिफोर टू अगेन बजट सेशन, which is of course this time it will be only a few days, sir. Interim budget, yes. And it will be 10 days. Few days बोले तो भी 10 minimum 10 days होता है. वो 10 days में भी आप पार्टिसिपेट करो. राष्ट्रपति के भाषण होता है, राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा होता है, धन्यवाद मोशन पर चर्चा होता है. मैं फोल्डेड हैंड्स आई अपील देम, प्लीज कम फॉर द डिस्कशन. पार्लियामेंट इज नॉट फॉर द डिसरप्शन. ठीक है, पहले वो किया है, वो चर्चा हम नहीं करेंगे. एक निर्णय जो हमने किया है, नया भवन में हम गए हैं, नया बिल्डिंग में हम गए, नया सोच के साथ जाएंगे. और भारत भी बदल रहा है, दुनिया भी भारत को स्वीकार कर रहा है. हम मिलकर चर्चा करेंगे. चर्चा ही सॉल्यूशन का एकमात्र रास्ता है. Because you have said that they are desperate. They are saying that you switch off their mics, camera is not focused on them, their speeches are not heard. An MP from your party, sir, used such bad language against Danish Ali, nothing is done to him. This is a one-sided parliament. So they are saying tali do haath se bajti hai. You want them to reach out to you, you will also have to reach out to them. One thing I will tell you, whatever mic, camera, these things today it is not happening. Ramesh Biduri's statement. Please listen to me. Sir. Please listen to me. Sir. राजदीप जी, मेरा एक सलाह है आपको. Sir. आपको जब किसी के पास आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, वो जो रिप्लाई जो देते हैं वो तो भी सुनना पड़ेगा ना. Of course, sir. हाँ, सुनिए ना अभी. तो ये जो माइक ऑफ करते हैं, कैमरा, एक कैमरा क्या आप पेपर फाड़ के फेंकते हो, कैमरा में दिखाना चाहिए क्या? What do you advise me? You please advise as a friend to me. तो ये पेपर फाड़ के ऐसे, ये पेपर ऐसे फोल्ड करके तू करते हैं ना, वो तो दिखाना चाहिए क्या? Bad behavior. तो ये करते हैं ना, वो नहीं दिखाते हैं. और फ्रॉम लास्ट 75 years, एटलीस्ट फ्रॉम 52 आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, पार्लियामेंट में स्पीकर जिसको परमिशन देता है उनका ही माइक ऑन होता है. और कभी कभी मैं भी खड़े हो जाता हूं एज पार्लियामेंट अफेयर्स, मेरा भी माइक जब ऑन नहीं होता है ना, मेरा रिकॉर्ड में नहीं आता है. राजदीप जी, ये सिस्टम है, ये सिस्टम हमने नहीं क्रिएट किया. मोदी जी आने के बाद ये सिस्टम नहीं आया. ये सिस्टम हुआ है
1952 से। रमेश बिदूरी पर कोई एक्शन, एनी एक्शन ऑन रमेश बिदूरी? प्रिविलेज कमेटी का दोनों में तो विषय है। प्रिविलेज कमेटी एक आध बार नोटिस दे के बुलाया भी है, तो प्रिविलेज कमेटी। हियर इज द प्रॉब्लम ना, यू एक्ट इमीडिएटली अगेंस्ट महुआ मोइत्रा और रमेश बिदूरी प्रिविलेज कमेटी। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर राजदीप, व्हाई यू आर कंपेयरिंग महुआ एंड दिस थिंग। महुआ हैज एग्रीड दैट आई हैव गिवन आईडी, आई हैव टेकन गिफ्ट फ्रॉम हिम and the same day, same places it was accessed. ये तो महुआ एग्री किया है। इसमें तो उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया, ये आरोप है और ये रिकॉर्ड पे भी आया है, इसको एक्सपंज भी हुआ है। और स्वयं राजनाथ सिंह ने इसके कंडेम करके उन्होंने विषाद व्यक्त किया है। ये सब होने के बावजूद भी प्रिविलेज कमेटी में गए। प्रिविलेज कमेटी एक शायद very shortly it is going to give the report as far as I have the information. As I end, let me lighten the mood. Is it easy being a parliamentary affairs minister or is it difficult? Do you feel sometimes like a school prince? I mean, the speaker of the Lok Sabha, Om Birla, has been attacked and questioned, saying he's behaving in a partisan manner. As parliamentary affairs minister, have you found life very difficult? See, whatever comes to us, we have to try to enjoy our work. I am trying to enjoy my work. Well, you've always been very receptive to taking all the questions and I appreciate that. Thank you so much, Prahlad Joshi ji, for joining me. The Parliamentary Affairs Minister, Prahlad Joshi. Not an easy job in India today, being a Parliamentary Affairs Minister. Thanks for watching. Let's turn then to another of my headline stories, which is coming today from Rajouri, where a day after the terror attack in that Jammu and Kashmir district, we've seen a political fight break out. Former J&K Chief Minister Farooq Abdullah raking up Article 370, declaring that terrorism has not ended in the state. Congress and other parties also gunning for the centre. Meanwhile, on the ground, serious questions are being asked. Has Rajouri become a new epicenter for Pakistan-based terrorists? Take a look. The Jaish-e-Mohammed attack on an army convoy in Rajouri has triggered a political slugfest. First to train guns on the Modi government was former Jammu and Kashmir Chief Minister Farooq Abdullah, who raked up Article 370. ये 370 जिम्मेवार है टेररिज्म का, कहते थे ना, रियासत बैकवर्ड हो गई थी इनके वक्त में, है? आज भी आतंकवाद है। अभी आपने देखा कि कहाँ पहुंचे हम, आतंकवाद बंद नहीं हुआ। Congress and other India alliance members also hit out at the centre for failing to crack down on Pakistan-sponsored terror. It is very sad part and we salute the sacrifice of those brave Jawans. But in the meantime, Mr. Amit Shah, who continues to be in a denial mode on the happenings in Kashmir, must take responsibility. कल का जो पुंछ में हमला हुआ है, ये एक प्रकार से रिपीट ऑफ पुलवामा है। पुलवामा में इसी प्रकार से हमला हुआ था। सरकार सो रही थी, आज भी सरकार सो रही है। 370 हटाने का जश्न आप मना रहे हो ना, तो ये देखिए क्या हो गया है। This year alone, there have been 13 terror incidents in Rajouri, resulting in the death of 11 security personnel. In Poonch, there have been 8 terror incidents in 2023 alone, with 5 security personnel and 15 terrorists killed. There were also protests in Jammu against the attack in Rajouri. Will India's netas unite on issues of national security and put India first? Bureau Report, India Today. That's it on the show tonight. Just enough time to wish you all a very happy and Merry Christmas in a few days from now. And then, of course, a Happy New Year. I'm going to take a bit of a break. Thanks for watching. Stay well, stay safe. Jai Hind. Namaskar.